चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते हैं क्या पढ़े, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े? Unacademy brings you a new crash course where you get complete syllabus with गेट 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है एंड नाउ वी आर इन द एंड गेम। इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स, क्वेश्चंस लगाएं या थ्योरी पढ़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इनटू माइंड। आप सोचते हैं क्या पढ़े, क्या छोड़े, कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े? Unacademy brings you a new crash course where you get complete syllabus with best solutions. आपको मिलेगा हर क्वेश्चन का जवाब हमारे नए क्रैश कोर्स उम्मीद में। एक कंप्लीट सीरीज विद फुल सिलेबस, होंगे 10 बेस्ट एजुकेटर जो मिलके बनाएंगे आपकी जिंदगी को आसान। 35 दिनों में कंप्लीट सिलेबस विद बेस्ट क्वेश्चंस। सारे सब्जेक्ट्स बस एक चैनल पे, तो देर किस बात की? हो जाओ तैयार गेट 2021 को क्रैक करने के लिए। तो मिलते हैं 20 दिसंबर को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहला क्वेश्चन या एक ओवरऑल अपने पास सिनेरियो ये बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या होगा? Then it will be off. Everybody, good evening. Just a minute. Okay. Good afternoon, everybody. Welcome to Unacademy. Welcome to the session of the network analysis crash course. How are you all, guys? Tomorrow is the last session for our network crash course. This is the shortest form of the crash course I can give you in hardly, I think, 30 hours. If we take the regular class, in the more elaborate way, it took 70 hours for me to complete it. Now, in this case, I have completed in least possible time. So, welcome to Unacademy, guys. Welcome to the crash course of network analysis. Let's move. Good afternoon, Sid. So, this is my profile. This is Bhima Shankar. I did my MTech from IIT Kharagpur. I have around 10 years of teaching experience in GATE and ESE throughout the country. I am expertised with the subjects of digital circuits, network analysis, and microprocessors. Last 10 years, I taught to several thousands of students like you from almost all corners of the country in almost all top institutes of the country. So, every time I try to give to the students, to the best of my knowledge, the proper content and the minimum level to the maximum possible level, the depthest possible problems, and also in the easiest way, so that every single student is able to learn from my class. So, this is about me, and you can see my profile name. This is my profile name. Every day I am taking special classes. Today also I have started previous year question series of the network analysis. You can attend them. Today morning also I have taken one session on this. Tomorrow also morning I will be taking it around 9 AM, I think. So daily I am taking previous year questions, everything. Just download the Unacademy app, follow my profile. You will get all the notification of the free classes. So let me speak about the Unacademy Plus subscription. Sir, a Plus subscription क्या होता है sir? If you go for an Unacademy Plus subscription, you have multiple advantages. What are they, sir? You can have unlimited access to the all our live and also recorded video classes, which you can watch whether it is in live or in the recorded version n number of times. That is on the Plus platform, that is on Unacademy learning platform, not on the YouTube. On the Unacademy learning platform, our classes are very interactive. You can feel that one-to-one kind of interaction.
and also you will be having polls to participate. The class will be more interactive and more enjoyable compared to YouTube, no doubt in it. So you have multiple advantages there, like unlimited test series, regular doubt solving sessions, such that your doubts will be cleared in a proper way, and also multiple batches, crash batch, rank improvement batch, comprehensive batch, so many batches. Once you join an academy, you need not pay every single time. Once you join an academy, that is enough. You can once you subscribe, in that period you can access any batch of your wish, and that is about your plus. You have the classes both in English and Hindi also. If you go for Iconic, you have extra advantages. What are the extra advantages in the Iconic, sir? In the Iconic, what are the extra advantages is you will be having personal guidance with the help of personalized digital coach who will guide you to reach your destination in the best possible way by giving you the preparation strategy, schedule preparation, what to study, when to study, which subject कहाँ से पढ़ना, सब डिस्कस करेगा आपसे, and also आपका performance analyze करेगा, इसमें you are weak, इसमें you are strong, like that analyze करके you will be getting a personalized guidance. So उस वाला personalized guidance के लिए आप Iconic subscription लेना चाहिए. So if you go for plus subscription, guys, these are the price details for 1 month, 3 months, 6 months, 12 months, 18 and 24 months. So if you are third year, go for 18 months only, and second year you should go for 24 months. So these are for short term duration. I suggest you minimum go for 12 months, which will give you more best results and cost effective also. So these are the prices per duration, and these are the prices per month. When you take 24 months, it hardly 18,133 per month. So if you apply my coupon code Shankar10, okay, whenever you join or your friends join, refer the coupon code. If you like my teaching, if you are my follower, you can use my coupon code Shankar10 for a total 10% discount. Total GATE classes, not for my classes. Total GATE and ESE subscription of our entire team. So after applying the code, you will get the 10% discount, and the final price for 1 year is 27,225, 18 months is 34,650, and 2 years is 39,600. If you go for Iconic subscription, these are the price details for the Iconic subscription. You will be getting it for 50,250 and 74,000. After applying the coupon code here also, you will be getting it for the price of 45,225 and 66,600. Right? So let's start the class. Just a minute. कल क्लास का जस्ट ए मिनट. कल हम पावर कैलकुलेशंस डिस्कस कर रहे हैं. हाँ. So let's revise yesterday's class once. So yesterday class I have given average value, RMS value, power factor. All these conditions are discussed yesterday class, right? We have done few good number of questions. Then I will finish few more questions in this. Then we will go for the what we call this question I left as a homework. Now come to this question. It's a GATE 2014 question. A question GATE 2014 में दिया. So let's do it. I will do it. Let's just read the question. Good afternoon, Saddam. Any problem with the audio? Not audible. Just a minute. Let me check. Now it is fine. Is it audible now? Audible है अभी? अभी बताओ. Fine? Right. Chalo. Listen here. In the network shown in the figure, you have a 230 volts power supply
डिलीवरिंग द पावर टू टू लोड्स, मेरा पास 2 लोड है, दोनों लोड को पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है सर. एंड पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड्स आर 10 किलोवाट एंड 10 किलो वोल्ट एम्पियर. दोनों लोड का पावर्स कितना सर, फर्स्ट वाला को 10 किलोवाट, सेकंड वन 10 किलो वोल्ट एम्पियर. देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट केस में पावर इज वाट्स. वाट्स का मतलब क्या सर, वाट्स का मतलब क्या, इट इज रियल पावर. वाट्स का मतलब क्या होता है सर, रियल पावर. सेकंड केस में व्हाट इज द पावर, सेकंड केस में व्हाट इज द पावर, VA. इसका मतलब apparent power. That is, by seeing the units you should justify what kind of power it is. So first case में power factor 0.8 leading, second case में power factor 0.8 lagging. Determine the complex power delivered by the source. Okay, so चलो, here what is the complex power, S1 is V square by Z1. What is S2, S2 V square by Z2. What is S, S1 plus S2, that is V square into Y1 plus Y2. Okay, sorry, V square by Z1 plus Z2. Okay, Z1, sorry, Y1 plus Y2, I'm sorry. This can be written as V square Y1, V square Y2. Y is 1 by Z. Fine. So total complex power, okay. Total complex power equal to sum of individual complex powers. Sum of individual complex powers. चलो next. So let me use this power triangle. आपको पता है ना power triangle क्या होता है, PQS. Okay. P is equal to P by S is cos phi, sin phi and tan phi. ये रिलेशंस कल क्लास में डिस्कस किया. फर्स्ट केस में एग्जामिनर पावर कितना दिया, 10 किलो वोल्ट. फर्स्ट केस एग्जामिनर हैज गिवन द पावर इज इक्वल टू 10 किलो वाट, राइट. सो यूजिंग दिस आई नीड टू फाइंड द S. सो लेट मी फाइंड Q. फर्स्टली phi is equal to cos inverse of 0.8, 36.86 degrees. ठीक है. Then listen here. What is tan phi? Tan 36.86 will be 0.75. But what is tan phi is given by Q by P. So what is Q1, sir? P1 tan phi 1. Okay. So P1 tan phi 1 is equal to, P1 is 10 kilowatt into 0.75. So 10K into 0.75. 7.5 kilo volt ampere reactive. So please listen here. If you find S here, what is S1, sir? It will be, you should comment now, tell me whether it is P1 plus JQ1 or P1 minus JQ1. क्वेश्चन में एग्जामिनर दिया इट इज लीडिंग. लीडिंग है तो P1 प्लस JQ1 लेना और P1 माइनस JQ1 लेना. आप लोग कमेंट करो. बताओ. cos phi doesn't have any what is that? Cos phi doesn't have any effect whether it is cos plus phi or minus phi. Siddh. Cos phi is cos phi only. So that's why we specify lead and lag. Namaste Thakur. Yes, it is not plus, guys. It is lead, na. You should take minus. Yesterday class I have given this. When it is lead, it should be P1 minus JQ1. So P1. Yeah. 10K minus J 7.5 kilo volt amperes. Yes. Why I took minus? Why you took minus is because it is a leading given by examiner. Okay. First information is completed, sir. Please do the second part. Second information बताओ sir. Second information पे
what happened is yeah, examiner has given that in the for the second case power is 10 kilovolt ampere. It is called as apparent power, 10 kilovolt ampere. Okay, now listen here. And phi is equal to same. Cos phi is given by 0.8, but now he has given lag. Then what is sin phi? It is 0.6 because cos inverse of the 36 cos sin 36 is 0.6, 36.86 degrees. Now listen, what is the p? p क्या होता है सर? What's your p value? p2 कितना होता है सर? मेरा s2 mod into cos phi, s cos phi होता है ना. So s2 कितना 10k, cos phi कितना 0.8, so 8 किलोवाट. Q2 कितना होता है सर? S2 sin phi 2. S2 कितना सर? 10k. sin phi 2 कितना? 0.6. 6 kilovolt ampere reactor. Then what is your S2? P2 plus JQ2. Why plus sir? Because examiner has given lag, right? So lag का मतलब ले लो 8 plus J6 kilovolt ampere. पूरा S कितना होता है सर? S1 plus S2. That is add S1. That is 10. 10 plus 8. 10 plus 8 is 18. Minus J 7.5. This is 7.5 na. Dot should be more visible. Right. Minus 7.5 plus 6. Minus J 1.5 kilovolt ampere. Finish. This is your total complex power. S सर इतना करना क्या सर? पूरा बोर्ड फिल किया आपने स्मॉल क्वेश्चन के लिए. इतना करना नहीं चाहिए. आपको समझ होने के लिए मैं इतना किया. That is to give you an experience. If you know one power, how to get the other. इसके लिए मैंने पूरा दिया. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना नहीं चाहिए. शॉर्टकट है पूरा. वन मेरा S कितना है सर? S1 plus S2 ना. How to find S1? S1 is equal to mod S1 angle phi 1. mod S1 कितना होता है सर? P1 by cos phi 1. Already examiner दिया P1 cos phi 1. Directly you will get the S1. Similarly आपका S2 क्या होता है सर? mod S2 दिया examiner angle phi 2. ओवरऑल S क्या होता है सर? S1 प्लस S2 लेना चाहिए. आप लोग ये बताओ, कुछ मैंने इंटेंशनली एक मिस्टेक किया, बताओ इसमें क्या मिस्टेक है? मैंने इंटेंशनली एक मिस्टेक किया, आप लोग बताओ इसमें मिस्टेक क्या? टेल मी. Yes. Here you should take minus because it is lead. That is the simple thing. Here it's a 3-step simple question. I did it because I want to give you how to obtain one power with another power. इसका relation देने के लिए मैंने इतना किया. नहीं है तो इतना नहीं चाहिए. चलो next question. This is the process, right? So ये वाला question आप घर पे try कर सकते हैं. Same model. आपको S चाहिए. सी हियर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर क्वेश्चन इज वोल्टेज दिया, 3 का पावर्स दिया, यू नीड टू फाइंड I. प्लीज लिसन, वेरी सिंपल. आई विल गिव यू S इक्वल टू V इंटू I कॉन्जुगेट. सो व्हाट इज I? S बाई V कॉन्जुगेट ले लो बस. व्हाट इज योर S? S1 प्लस S2 प्लस S3.
S1 कितना सर? It is 12 kilowatt is P. Okay, I am doing it anyway. So what is S is given by P by cos phi, that is 12,000 by cos phi कितना 0.866 angle. What is that? Lead na, so minus cos inverse 0.866. This will give you S1 because you know power P. You can find mod S by P by cos phi, angle minus phi 1. Then S2 क्या होता है सर? S2 will be same story, 16,000.85 by minus cos inverse 0.85. Last one, here KVA दिया ना, it is already S only, mod S is given directly, 20,000 angle cos inverse of 0.6, because here lag you should take place. That's all. From that you get S, divide with V and take the conjugate, you will get the answer. That much simple I have made your power calculations. Okay, is it fine? Shall we move to the next question? Tell me guys, is it okay? Right, let's do one more question in this model. This is the last question in your power calculation topic. After that we will go for the what we call filters topic. Okay, so listen here. This is the question given by examiner. Here some sort of R, RL, XL, this kind of network is given by examiner. For this given network, examiner has given V1 equal to 220, V2 equal to 122, V3 equal to 136. Like that they have given the values of V1, V2, V3. Using that, examiner question is, if the load resistance RL is equal to 5, what is the power absorbed by the load? Second question is, determine the load power factor. We will do one by one all these things. Now listen here. Here, simplest way to do this question is with the help of phasor diagrams. Phasor diagrams ले लो. Listen here. What is V2? V2 क्या होता है? V2, अरे यार, IR. Next, VRL equal to I into RL. VXL equal to IJXL. That is IXL angle 90 degrees. Now, what is V3? VRL plus VXL. What is V1? V2 plus V3. I will use all these information. मैं सब information use करके phasor diagram draw करेगा. पहले आप बताओ पूरा नेटवर्क में कौन कॉमन है सर? करंट कॉमन है. सो करंट रेफरेंस लेके मैं phasor diagram ड्रा करना चाहिए. सो करंट रेफरेंस लेता हूं. So this is my reference current I. Sir, what about the voltage across V2? V2 is equal to, 1 minute, yeah, V2 equal to I into R. So V2 क्या होता है sir? I into R. It is in phase. Next, what about V in the resistor sir? What about the V in the resistor sir? Voltage across the resistor. Like this. Okay sir. What about the voltage across the inductor sir? What about the voltage across the inductor? Here the voltage across the inductor is at an angle of 90 degrees. Now if you add VRL and VXL, the resultant is called, VRL VXL add किया तो resultant is called V3. So phi 3 you take.
or you take phi 2. Next, if you add V2 and V3 vectorially, whatever the resultant you will get, this is what we call your V1. This one. And here let's take the angle as phi 1. Okay, so done. So V1 आया, V2 and V3, VRL, VXL सब आया. So okay, what to do sir? Phasor diagram से relation निकालो. You can find V1, V2, V3 आपको पता है. So बाकी निकालो. Listen here. What is the equation whenever it forms a right angle triangle? V2 plus VRL plus VXL whole square equal to V1 square. This is one equation. Next, VRL square plus VXL square equal to V3 square. So here if you draw the phasor diagram equations say you already know V1, V2, V3. So two unknowns under two equations, solve it, you will get VRL equal to some 61.3. Right. So first question is determine the load power absorbed by the load. That is when RL equal to 5, after solving you get 61.5 now. What is that? Power taken by the resistor. Power in the load resistor is VRL by R, that is 61.5 whole square by R. This is the first question. First question is power when RL equal to 5, what is the power? Simple question. V square by this square by R. Okay. So power in the load resistor is what about the power? So एक part हो गया. Second question see, determine the load power factor. Yes, here I need your response. Can you tell me what is the load power factor? Is it cos phi 2 or cos phi 1? बताओ, cos phi 2 or cos phi 1? What is the load power factor? बताओ. Tell me, cos phi 2 or cos phi 1? Tell me guys. Load power factor is cos phi 2 or cos phi 1? Come on, comment. Yes. Cos phi 1. Who is that? Phi 1, Mamata, Anurag. Remaining students, comment it. Cos phi 2 or cos phi 1? Cos phi 2 or cos phi 1? Tell me guys. Yes, Gaurav and Babu, right answer, cos phi 2. Examiner specified na load power factor. That is, a load का power factor क्या होता है? Not पूरा circuit का power factor, not at the input power factor. It is the power factor at the load. Load part is this ना. इसमें power factor क्या होता है सर? Cos phi 2. Cos phi 2 क्या होता है सर? VRL by V3. VRL 61.5 by V3 136 will give you the answer. Yes. No. Anurag, that is the total power factor. Generally the input or source power factor we call. Here this is the load power factor is asked by the examiner. Okay. So that will give you 0.45 something. Right. So here 2016 mein very simple question is given for 1 mark. What is the average power consumed by the load? Can you comment on this answer? Can you comment the answer of this question? Read the question and try to answer it. Good. Gaurav.
500 and what? Very simple question, right? Correct. Okay. Here the average power is always we should take the fundamental. Here harmonics तो है, fundamental क्या होता है? If you have this also, I have given harmonics में कैसा treat करना. So here the harmonic terms are 0 for this. So for this, what is the average power consumed? VRMS, IRMS, cos phi. That's all. 100 by root 2. This is given in gate into cos 60 degrees. This much simple question. Okay. So what will you get? 250 watt. हमेशा टाइम डोमेन इज ऑलवेज मैक्सिमम वैल्यू. 500 कहाँ से आया? गाइस cos phi को निकालना चाहिए. cos phi. He asked watts. Watts means VRMS, IRMS, cos phi. Okay. So in this question, tell me the reactive power. Fastly, quickly do it and tell me the reactive power. What is the reactive power? Tell me. What is the reactive power? What happened यार? इतना लेट क्यों? Comment. Yes. What we call reactive net reactance is 0 ना. XL equal to XC. Inductor capacitor cancels. The net reactive power is 0. Resonance वाला condition. Okay, ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करो, आपका आंसर भी आएगा. होमवर्क दे रहा हूँ मैंने. Solution दिया. This also you can, it's a transient question anyway, we have not discussed the transient yet, leave it. See here, this is the question, no need I think. 1 minute, any other questions possible? Right. So that is about your total power calculation. Okay, so now let's move to the next topic, that is your filters. Sir, filters क्या होता है sir? Filter is very simple. Okay, good. So filter is very simple. Filter का मतलब क्या? Filter will avoid, will accept the required part and reject the not required, undesired part. आपका पानी वाला फिल्टर, वाटर फिल्टर भी है. वाटर फिल्टर क्या करेगा सर? पानी आएंगे तो इसमें जो हमको नहीं चाहिए जर्म्स एटसेट्रा को रिमूव करके जो हमको चाहिए डिजायरेबल को सेंड करेगा. पानी वाला फिल्टर, एयर वाला फिल्टर भी होता है ना. सो आपका लाइफ में भी फिल्टर्स यूज़ करेगा. सो फिल्टर्स डिस्कस करने के पहले देखो, आइडियली हमारे पास 4 और 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स है सर. लो पास है, हाई पास है, बैंड पास और बैंड स्टॉप. लो पास क्या होता है सर? It will allow the low frequency filter signals before the cutoff frequency and it will stop the signals after cutoff. इसको कहते हैं पास बैंड, इसको कहते हैं स्टॉप बैंड. आइडियली आपको शार्प जैसा चाहिए, यही तक चाहिए, यही के बाद नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए. बट प्रैक्टिकली यू विल बी हैविंग द रेस्पॉन्स विच इज स्मूथ नॉट शार्प. ठीक है. सो सिमिलरली हाई पास, high pass में this is an example. At low, before cutoff frequency it will stop, after that it will pass. Band pass, it will pass a band of signals like our resonance, best example. Band stop भी होता है. This is a topic not exclusively networks. Networks से आपको थोड़ा सा filters का बारे में what we call information मिलेगा, but this topic is mainly related to signals. सिग्नल्स में आप लोग डिजिटल फिल्टर डिज़ाइन है, एनालॉग फिल्टर डिज़ाइन यू विल स्टडी इन एनालॉग एक्टिव फिल्टर डिज़ाइन एंड ऑल्सो कंट्रोल सिस्टम्स में भी लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर. इसका इस केस में भी यू विल बी स्टडीइंग योर फिल्टर्स, लैग लीड, लीड लैग. ओके, सो इट्स ए मिक्स्ड टॉपिक और इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक, राइट? सो यू कैन सी दिस एग्जाम्पल. सो व्हेन यू लिसन समथिंग you should have a filter in your ear. So you should accept something, reject some people. Okay.
सो जो आपको चाहिए उसको एक्सेप्ट करना, जो आपको नहीं चाहिए इसको फिल्टर करना चाहिए. In your ear also there is a filter which will allow some frequencies and it will stop some frequencies. That is also there anyway. We call mel frequency filter. And girls को पता है ना सेल्फीज लेता है, गर्ल्स और बॉयज सेल्फीज लेने के बाद आप लोग फिल्टर्स अप्लाई करेगा, ब्यूटी फिल्टर कहते हैं. सो आपका फोटो पे अनडिजायर्ड पार्ट को रिमूव करके डिजायर्ड पार्ट को एनहेंस करेगा. ये भी एक एग्जांपल है फिल्टर्स का, राइट. सो हाउ दिस फिल्टर्स अकॉर्डिंग टू वॉट एवर दिस केस, हाउ टू डिजाइन दिस फिल्टर. हमने क्या डिस्कस कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर्स. फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर्स क्या होता है सर, दिस आर द फिल्टर्स विच विल अलाउ सम फ्रीक्वेंसीज एंड स्टॉप सम फ्रीक्वेंसीज. सो फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर्स डिजाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए सर, फ्रीक्वेंसी वाला फिल्टर्स डिजाइन करने के लिए आपको चाहिए एन एलिमेंट और एन इम्पिडेंस फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन इम्पिडेंस फंक्शन विच इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. देन लिसन हियर, if you need a impedance function which is a function of frequency, obviously you should require two elements. क्या sir, inductor और capacitor. So you can see here inductor. इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है सर, जे ओमेगा एल. ओमेगा इंक्रीज हुआ तो इंडक्टर का इंपिडेंस ज्यादा होता है, कम किया तो इंपिडेंस कम होता है. कैपेसिटर का इंपिडेंस क्या सर, 1/j ओमेगा सी. ओमेगा इंक्रीज किया तो इट विल इंक्रीज, अदरवाइज इट विल डिक्रीज. सो एट लो फ्रीक्वेंसी J omega L becomes J0, that is short circuit. At high frequency, J omega L becomes J infinity, that is open circuit. So at very low frequency, inductor acts as a short. At high frequency, inductor acts as a open. Similarly, capacitor, reverse, 1/j omega C. Omega 0 में 1/0 infinity जैसा काम करेगा, open circuit. Omega equal to infinity, it will be 1/infinity, acts like a short circuit. ठीक है, that is about your what we call inductor capacitor basics. Now let us see, identify this filter circuit. मेरा पास जैसा एक सर्क्यूट है, रेसिस्टर, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर. इसको मैंने implement what we call, I should identify what kind of filter it is. Let's do it. It's a parallel connection of two networks. ठीक है सर. फर्स्ट नेटवर्क में अगर ओमेगा 0 है तो क्या होता है सर, ओमेगा 0 में कैपेसिटर कैसा काम करेगा सर, ओपन सर्क्यूट जैसा काम करेगा. कैपेसिटर ओपन सर्क्यूट किया तो थोड़ा सा ड्रॉप इसमें होता है, इसके बाद आपको आउटपुट मिलेगा. ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्क्यूट. कैपेसिटर शॉर्ट किया तो पूरा करंट इसमें चलेगा, आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा. आपका आउटपुट कितना होता है सर, 0. सो लो फ्रीक्वेंसी यू आर गेटिंग द आउटपुट, हाई फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं मिल रहा है. इसका मतलब क्या होता है सर, दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट भी ले लो. ओमेगा 0 इंडक्टर क्या होता है सर, शॉर्ट सर्क्यूट. इसमें सीरीज में शॉर्ट है तो ठीक है, करंट चलेगा ना आउटपुट में, आउटपुट आएगा. बट ओमेगा इन्फिनिटी में इट विल एक्ट लाइक ए ओपन सर्क्यूट. देन व्हाट इज द आउटपुट, इट इज 0. अगर ये ओपन सर्क्यूट किया तो इट विल, नो करंट विल फ्लो एंड द आउटपुट विल बी इक्वल टू 0. ओके, नाउ लो फ्रीक्वेंसी मुझको आउटपुट आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी आउटपुट नहीं आ रहा है. ओके, low frequency I am getting the output, high frequency I am not getting the output. So what does it mean? Low pass filter. Okay, it is called as low pass filter. Okay, so पैरेलल में किसी भी एक कंडक्ट हुआ तो आपका आउटपुट आएगा, दोनों कंडक्ट नहीं करना चाहिए. बट बोथ आर लो पास हियर. What is the answer is low pass filter. कुछ डाउट है तो you can ask, otherwise we will move next. Okay, चलो the next part. Are you ready for the next one? ये आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ. इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ. वेरी गुड गौरव, ट्राई करो, आंसर बताओ सेकंड वाला केस में.
Give a try. Let me do. At omega equal to 0, कैपेसिटर तो ओपन करेगा, आपका आउटपुट आएगा. शंट में ओपन हुआ तो आउटपुट आएगा ना. हियर कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो आउटपुट नहीं आएगा. ये पार्ट हम प्रीवियसली किया सेम वाला फिगर. नाउ सेकंड पार्ट में देखो, ओमेगा इक्वल टू 0, आपका वी नॉट क्या होता है. कैपेसिटर दोनों ओपन किया तो सीरीज में ओपन हुआ तो आपका आउटपुट नहीं आएगा. हियर इंफिनिटी में इट इज शॉर्ट, यस आउटपुट विल कम. दैट इज लो फ्रीक्वेंसी में ए वाला काम कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी में ए वाला काम कर रहा है. सो यू आर गेटिंग द आउटपुट इन लो, यू आर गेटिंग द आउटपुट इन हाई. इन बिटवीन इट विल स्टॉप. इसको क्या कहते हैं, बैंड स्टॉप फिल्टर. इन बिटवीन इट विल स्टॉप, इसको कहते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर. Okay, you can also have the doubt, sir, why can't we call all pass? All pass is a separate case. I will discuss that. It will be different. I will explain that also. But here it is called band stop. That is, it will allow low, it will allow high. बीच में it will stop. इसको क्या कहते हैं sir? Band stop filter. Right. Let's move. Okay. Right. Let's move. Here in exam, figure is given. You know how to do it. There is another way examiner can give you is he may give you poles and zeros. Poles and zeros दिया तो बहुत सारे मेथड्स है. अगर आप लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर कंट्रोल सिस्टम्स में पढ़ेंगे तो लीड कंपनसेटर में जीरो फॉलोड बाय पोल आएगा, लैग में पोल फॉलोड बाय जीरो आएगा. दैट इज अ डिफरेंट केस. देयर फर्स्ट वन इज ए हाई पास, सेकंड वन इज ए लो पास फिल्टर. ओके, बैंड पास एंड बैंड स्टॉप, लैग लीड लैग वाला कंडीशंस में यू विल बी स्टडीइंग देयर. Similarly here, I will give you some shortcuts which will help you to eliminate most of the questions, not every single question. ठीक है? So if you take the series RLC circuit को, let's draw this figure series RLC circuit at different omegas. Okay, at different omegas का मतलब क्या sir? Omega equal to 0 and omega equal to infinity. Let me draw the series RLC circuit at different omegas, that is omega equal to 0 and omega equal to infinity. At omega equal to 0, your inductor acts as short, capacitor acts as a open. At omega equal to infinity, what happens? Inductor acts as a open and capacitor acts as a short. Now, see here. If you see this circuit, at omega equal to 0, open circuit में no current will flow. Resistor will act like a resistor का voltage will be 0. Inductor will be short circuit, no voltage. So this total voltage will be across capacitor. Fine. If you come here, omega equal to infinity, what happens? Again, inductor open, capacitor short circuit, no current is flowing. Then what happens, sir? Here no drop, voltage is across inductor, no drop here. So what is the conclusion, sir? If you see the output of the resistor, it is not allowing the output at low frequency, not allowing the output at high frequency. इसका मतलब क्या सर? It is like acting like a band pass filter. ये तो हम resonance में भी discuss किया. If you take the output at resistor, it is a band pass. Similarly, if you take the output at inductor, low frequency में it is 0. High frequency it is V. What does it mean? You are getting the output at high frequency, not getting the output at low frequency. इसको कहते हैं high pass filter. If you take the output at the capacitor, again same story. If you take the output at the capacitor, then what happens? At low frequency, you get the output. High frequency, you are not getting the output. So it is an example of our low pass filter. Now let's write the transfer function. If you take the output at resistor, VR by V is I into R by I into R plus SL plus 1 by SC.
which will give you SCR by S square LC plus SCR plus 1. That is 1 0 and 2 poles आएगा. 1 0 at origin and 2 poles. किसी भी सर्क्यूट में ये कंडीशन दिया तो बैंड पास फिल्टर ले लो. Similarly, if you take the output at the inductor, that is SL by R plus SL plus 1 by SC, S square LC by this one, that is 2 poles at the origin आएगा, sorry 2 zeros at origin and 2 poles आएंगे तो high pass filter. Similarly, if you take the output at the capacitor, अगर कैपेसिटर का पास मैंने आउटपुट ले लिया तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है सर? वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर बाय टोटल, दिस वन, that is 1 by SC by R plus SL plus 1 by SC, that will give you no pole, sorry, no 0 2 poles. No 0 2 poles is an example of low pass. So what is the conclusion, sir? 1 0 at origin and 2 poles is a band pass. 2 zeros at origin and 2 poles, high pass. No 0 2 poles, band pass, sorry, low pass. Let's do this question. Answer me. Okay, let me take the question. What is that question, Sidhu? Sir, at R we get the output only at omega equal to omega naught. No, it's a continuous function. We have already seen now. You will get like this, but you get the highest at omega equal to omega naught. It's a continuous function. Okay, Sid. So चलो आप लोग ट्राई करके इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. What kind of filter it is? What kind of filter it is? ये कहाँ? Please give a try. Give a try, guys. This is band pass. चलो चेक करेगा. ओमेगा इक्वल टू 0, आपका h ऑफ j ओमेगा क्या होता है सर? 0 बाई 0 प्लस 0 प्लस 1. अरे यार एक मिनट, नंबर ऑफ जीरोस कितना? 1. नंबर ऑफ पोल्स कितना? 2. 0 is at origin. I have already given this answer as band pass filter. Fine, fine, fine. Let me prove the same by a different way also. What is omega equal to 0 में आपका h of j omega क्या होता है सर? आपका h of j omega क्या होता है सर? 0 by 0 plus 0 plus 1, right? At omega equal to infinity, what is your h of j omega? First you take common s. Substitute omega equal to infinity. 1 by infinite plus 1 plus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. That is, it is 0 at low frequency, it is 0 at high frequency. इसको क्या कहते हैं सर? Band pass filter. There are दो methods to do this question. दोनों मेथड पे आपका आंसर सेम आया. Okay, so right, next question. Yes, this वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ. Give your answer. Give your answer, guys. Comment. What kind of filter it is?
Come on, comment guys. High pass. Let's check. जीरोस कितना 2, पोल्स कितना 2. हमने डिस्कस किया 2 जीरो 2 पोल्स है तो हाई पास, बट वो दोनों जीरोस कहाँ पे होना चाहिए? ऑरिजिन. डोंट जनरलाइज द थिंग्स. इट शुड बी, if the same condition comes, use the formula directly, use the shortcut blindly, otherwise don't use it. That is हमारा zeros not at origin इस केस में, not at origin. अगर they not at origin है तो you should check. Now omega equal to 0. What is your h of s? h of s क्या होता है सर? 0 plus 1 by 0 plus 0 plus 1, that is 1. Omega equal to infinity. What is your h of s? S square common ले लो, because if you directly substitute infinite by infinite form आएगा ना. So 1 plus 1 by s square. Substitute omega equal to infinity, 1 by infinity is 0. That is आपको लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी में भी आउटपुट आ रहा है. ओके, दैट इज h ऑफ j ओमेगा. इसका मतलब बैंड स्टॉप फिल्टर. ओके, so when they are not at origin, don't apply our rules blindly according which the particular is given, then only you should apply. So the next one, h of s इक्वल टू क्या होता है सर? एस स्क्वायर. इस केस में क्या होता है? यस, इस केस में 2 जीरो आया, 2 पोल आया. जीरो कहाँ पे सर? ऑरिजिन पे है सर. सो इस केस में इट इज करेक्ट, हाई पास फिल्टर. इफ यू वांट टू चेक कर सकते हैं. ओमेगा इक्वल टू 0, आपका h of s 0 बाई 0 प्लस 1. ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, आपका h of s क्या होता है सर? एस स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 बाई 1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 बाई एस स्क्वायर. 1 प्लस 0 प्लस 0, दैट इज 1. सो लो फ्रीक्वेंसी आई एम नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, हाई फ्रीक्वेंसी मुझको आउटपुट मिल रहा है. इसका मतलब क्या सर? हाई पास फिल्टर. ठीक है, राइट. सो यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ दिस. सो सिमिलरली इसमें नो जीरो है तो ब्लाइंडली लो पास फिल्टर ले लो. एक क्वेश्चन दिया 2019 पे, इन ए सेकंड ऑर्डर फंक्शन अगर न्यूमरेटर इज कांस्टेंट, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इज ऑलवेज लो पास फिल्टर. ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. आपका फेवरेट अभी आया, आप इंतजार कर रहा है ना ऑल पास फिल्टर के लिए. आया ऑल पास फिल्टर. लेट्स डू इट. लेट्स सॉल्व ऑल पास फिल्टर नाउ. If you substitute s equal to j omega, आपका h of j omega equal to 1 minus j omega by 1 plus j omega. What is the magnitude of h of j omega? Root of 1 plus omega square by 1 plus omega square. This is equal to 1 for all omega. This is what we call all pass filter. इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सर? हमेशा 1 होना चाहिए सर. इट विल सेंड ऑल फ्रीक्वेंसीज. फिल्टर का जरूरत क्या है सर? सो फिल्टर लेना क्यों सर? आपका डाउट आएगा ना. सो आई विल एक्सप्लेन दैट डाउट. इसका एंगल क्या होता है सर? रियल एक्सिस पॉजिटिव, इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव. माइनस tan इनवर्स b by a. डिनोमिनेटर में भी माइनस tan इनवर्स b by a. इसको क्या कहते सर? -2 tan इनवर्स ओमेगा. ठीक है, चलो
right? So now this is your angle. What is the that is here in a all pass filter, your magnitude is a constant for all omega, but phase is a function of frequency. This is what we call all pass filter. ये तो phase shift provide करेगा with respect to omega, but the magnitude हमेशा constant होता है. If you plot the pole zero plot कैसा होता है सर? Listen, you have a 0 at s equal to 1 and pole at s equal to minus 1. You can see this is the pole 0 plot. एक important point क्या है sir? Sir, in any all pass filter, poles and zeros are symmetrically located with respect to the j omega axis. All the zeros on the right hand side, all the poles on the left hand side, which are equidistant from the origin. This is the property of the all pass filter. Now ये क्वेश्चन देखो, 1 plus s by 1 minus s ले लिया तो इस केस में भी आपको h of j omega 1 आएगा for all omega, but this is not all pass filter. हमको क्या चाहिए? सारे zeros right side पे, सारे poles left side पे. Don't take like this, सारे poles right side and सारे zeros left side. It is not a valid function or not a stable function. You cannot realize or realizable function नहीं है. ठीक है? Pole right hand side नहीं होना चाहिए. क्या होना? All the poles on the left hand side, all the zeros on the right hand side. ठीक है? That is about your filters of all pass filter. आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो. Give a try for this question. Comment your answer. See, generally it is used in the distortionless condition. That is, what you are saying is, you can use in that case amplifier itself. Okay, but here it is having you constant gain for all frequencies. Yes, you can use in that application also. Distortionless line condition you will study in your signals na. Magnitude is a constant and what we call frequency can be a function of omega. Don't worry, you will study in the signals, Gaurav. Okay, पहले ये क्वेश्चन कर लो. सद्दाम है पास दिया. Do it. Try your answer. Identify the filter whose pole 0 plot is given. Comment. मुझको आंसर नहीं आ रहा है आप लोग से. Okay, let me do it. Here zeros कितना? 2. Poles कितना? 3 और 3 6. It is not in our condition of explanation. मैंने zeros 2 poles 0 कट दिया, zeros 2 poles 6 दिया तो don't apply it. Our rules तो valid नहीं इस केस में. क्या करना? एक फंक्शन फ्रेम करो. h of s equal to 2 zeros origin पे है, then s power 6 poles ना. Generally if values you know,
we will also do like this. We find initial gain, final gain, and we will find the slope. From that also we will say that we can say Bodo plot method also you will do. Generally here values तो नहीं दिया, generalized function. Okay, now see here. Omega equal to 0. What is h of s? Is k into 0 by, substitute s equal to 0 here, 0, 0, 0 and k naught. 0 by anything is 0. Next, omega equal to infinity. What is h of s? Take s square common. Then you will get here infinity, infinity and so on. K2 plus ऐसा आएगा, बिकॉज एस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 by infinity कितना 0 होता है. सो लो फ्रीक्वेंसी 0, हाई फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब क्या होता है सर? बैंड पास फिल्टर. लो फ्रीक्वेंसी में मुझको आउटपुट नहीं आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी में आउटपुट नहीं आ रहा है, बीच में आएगा, इसको क्या कहते हैं सर? बैंड पास फिल्टर. ओके, I am not getting the output at low frequency, I am not getting the output at high frequency, in between I am getting the output. This is what we call band pass. Generally we add more poles at equidistance to improve the gain at a particular frequency. Similarly, if you add zeros, design point of view it is not required for you. If you add more zeros at a equidistance, then you will get response down at a particular frequency. That is same question, 2 zeros and 6 poles same way में दिया तो it will become band stop filter. Okay, poles will improve the response and the zeros will decrease your response. Okay, height. Next, see here one more thing. In the all pass filter, one of the important question in GATE बहुत बार आ गया, maximum phase shift. What is the maximum phase shift offered by the all pass filter? Is given by minus 2 tan inverse ओमेगा ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करो ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, आपको minus 2 tan inverse infinity आएगा, that is 180 degrees. This is an important objective bit. What is the maximum phase shift offered by the all pass filter? Maximum phase shift offered by the all pass filter कितना होता है सर? 180 degrees. ठीक है. Similarly, we can find the maximum phase shift offered by the low pass filter also. Okay, what is the maximum phase shift offered by the low pass filter? देखो, low pass filter कैसा दिखते हैं सर? Resistor, inductor. Okay, so resistor और capacitor, इसको कहते हैं integrator और low pass filter circuit. If you take C and R, it is a differentiator or a high pass. For inductor, it is dual anyway. So h of transfer function 1 by 1 plus SCR होता है. S equal to j omega, that is 2 pi f RC. So if you substitute it here, what is the cutoff frequency is given by 1 by 2 pi RC. Why cutoff frequency is 1 by 2 pi RC here, sir? If you make f equal to 1 by 2 pi RC, this both will cancels and your magnitude will be 1 by root 2. Why 1 by root 2, sir? Power will be half. मैंने बताया ना, you can see if you plot the response, it will decrease, 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 and at cutoff frequency it will become 1 by root 2. After that it will further decrease. So before this we take it as a pass band, after this we take it as a stop band. That is, we consider compared to the highest possible up to 50% power guarantee is up to cutoff frequency. Okay, leave it. Now examiner question is maximum phase shift क्या होता है low pass में? If you write the angle of this signal minus tan inverse f by fc. If you substitute f equal to infinity here, minus 90 आएगा. But all pass will allow all frequencies, but high pass, low pass will allow only up to fc. So here highest frequency क्या होता है sir? fc only. Then what is the answer is minus 45 degrees only. So low pass filter will में maximum first order low pass में what is the maximum phase shift is minus 45. Similarly, we can prove for high pass it is plus 45. This is for high pass. It will occur at f equal to f minimum.
Now do this question. Read the question. Two identical, directly from the graph means Bodo plot you should see, Priyanka. Bodo plot say you can see the shape of the plot. Shape of the plot say we have at the starting I have given 4 graphs na. That 4 graphs may whichever it satisfies, that will be the filter. Okay, do this question and tell me the answer. Try it, give a try and tell your answer. Give a try and guess your answer. क्या हुआ, कमेंट्स नहीं आ रहे? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर फ्रॉम योर साइड. मैं तो आपके पास से आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ. अरे यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपके पास 2 आइडेंटिकल फर्स्ट ऑर्डर आरसी लो पास फिल्टर्स नॉन इंटरएक्टिवली. वेन एवर एग्जामिनर यूज द टर्म नॉन इंटरएक्टिवली, आपका एच ऑफ एस विल बी 1/1 प्लस SCR. आइडेंटिकल ना, यू शुड टेक सेम. दिस विल गिव यू 1/1 प्लस SCR whole square. That is, the poles are real and equal at -1/RC. Real and equal are called critical damped. Control systems में you will be studying it. Real and different over damped, complex conjugate under damped, imaginary poles and zeros undamped. And also, if it is non-interactively, what is the meaning? Between one system to second system, to avoid the loading effect between, they will keep buffer. Otherwise, this is not at all true. It is true because they used the term non-interactively. Okay, please understand. Non-interactive में क्या होता है? They will use a buffer because the transfer function can be multiplied only in that case, because there is no current here. Voltage will be transferred. Okay, if you don't have this buffer, loading effect say it will not be same like this. Okay, is it clear? Here he is not asking the filter, he is asking damping condition. Damping condition तो you will be studying in your control system. मेरा रेजोनेंस ट्रांजिएंट्स कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में भी डिस्कस किया, चाहिए तो रेफर कर सकते. ठीक है, चलो, दैट इज अबाउट योर टोटल फिल्टर्स का एक्सप्लेनेशन. मैं थोड़ा सा, नॉट कम्प्लीटली, लॉकस डायग्राम्स के बारे में भी डिस्कस करेगा, बट आपको लॉकस डायग्राम्स का सारे पॉइंट्स चाहिए तो
कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देख लो, ठीक है। सो थोड़ा सा डिस्कस करेगा लॉकस डायग्राम्स के बारे में, ठीक है। चलो, सपोज एग्जामिनर हैज गिवन दिस क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। ओके गौरव, चलो आप लोग ट्राई करके ये वाला जस्ट रीड द क्वेश्चन, नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर, जस्ट रीड द क्वेश्चन, गिव ए रीडिंग बस। Which of the following can be the locus diagram of the current phasor I2? Locus diagram of the current phasor I2 when omega is varied from 0 to infinity. अगर ओमेगा 0 से इन्फिनिटी तक वेरी किया तो करंट फेजर I2 क्या होता है? Okay, I will explain. What is the meaning of the locus diagram? If your variable is varying from 0 to infinity, how your vector is varying? Those points are dotted and added, it will give a diagram called as locus diagram. Root locus देखा ना, root variable k vary किया तो आपका root कैसा vary हो रहा है. Same way here also, omega vary कर रहेंगे तो आपका current कैसा vary हो रहा है. आपको shortcut से directly answer you can find it. How sir? When omega equal to 0, capacitor acts as open circuit. Because examiner question is omega is the variable. Capacitor open circuit किया तो इसमें कुछ नहीं current चलेगा. कुछ करंट नहीं चलेंगे तो इनिशियली इट इज 0, बट हियर ओमेगा इक्वल टू 0 में इट इज गिविंग सम करंट ना, रॉन्ग आंसर. नेक्स्ट, इट्स ए कैपेसिटर, करंट शुड लीड नॉट लैग, हियर करंट इज लैगिंग, रॉन्ग आंसर. ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, कैपेसिटर शॉर्ट एंड देन यू विल गेट EM by R2. यस, इट शुड बी लीडिंग 0 में, हियर 0 में. सर ठीक है सर, शॉर्टकट से आई समझ हो गया सर आंसर करने के लिए, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ये डायग्राम कैसा आया. मैं तो एक्सप्लेन करेगा. चलो लिसन हियर, लेट मी ड्रॉ इट. इफ आई गिव यू लाइक दिस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, लिसन हियर, कन्वर्ट द नेटवर्क. फर्स्टली फेजर डोमेन में कन्वर्ट करो. रेजिस्टर को R1 ले लो, इंडक्टर को J ओमेगा L, कैपेसिटर को 1 by J ओमेगा C ले लो. आपका करंट इक्वेशन क्या होता है सर? वोल्टेज बाय R2 प्लस 1 by J ओमेगा C. 1 by J तो माइनस J होता है, माइनस J इन द डिनोमिनेटर विल गिव यू प्लस इन द न्यूमरेटर. सो EM by रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस 1 by ओमेगा C होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स B by A 1 by ओमेगा C R2. ठीक है सर, आपका ओमेगा वेरिएबल है ना सर. ओमेगा कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है सर? 0 से इन्फिनिटी तक वेरी हो रहा है. मेरा ओमेगा तो वेरी करेगा 0. ओमेगा प्लेस में 0 रखो, क्या होता है सर? इट विल बिकम 0. रिमूव करो. ये ओके, 1 by 0 कितना होता है सर? इन्फिनिटी. 1 by इन्फिनिटी कितना होता है सर? 0. एट ओमेगा इक्वल टू 0 आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज 0 एंड फेज कितना होता है सर? 1 by 0 इज इन्फिनिटी. tan इनवर्स इन्फिनिटी 90. सर क्या हुआ सर? 0 पे फेज क्यों ले रहा है? Just for understanding how phase is varying. Okay, don't think sir magnitude 0 है तो phase का कुछ meaning नहीं है ना, meaningless. But take it, I will give you explanation. Similarly, when omega equal to infinity, अगर मेरा omega infinity किया तो 1 by infinity कितना? 0. इसको छोड़ दो, EM by R2 आएगा. 1 by infinity 0, tan inverse 0, 0 डिग्री आएगा. ठीक है सर, समझ हो गया. इसके बाद क्या सर? 0 एंगल 90 डिग्रीज, EM by R2 angle 0 degrees. Okay sir, fine sir. Now what does it indicate sir? What does it indicate is very simple. Listen here. Just a minute. Don't see the bottom वाला फिगर, इसको छोड़ दो. ठीक है, ऊपर वाला फिगर में तो एक्सप्लेन करेगा. से टेक दिस एज योर रेफरेंस. क्या सर? EM एंगल 0 डिग्रीज आपका रेफरेंस ले लो.
सर मेरा ओमेगा इज वेरिएबल, ओमेगा 0 में मेरा मैग्नीट्यूड 0 से शुरू करके ओमेगा इंक्रीज हुआ तो मेरा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होके इट विल इंफिनिटी में इट रीचेस em/r1. दैट इज व्हेन ओमेगा इज बीइंग वेरिड, okay, when omega is varied, your angle is decreasing, magnitude is increasing. Angle is decreasing, magnitude is increasing. For example, see here, at omega equal to 0, this is this much. At increase, when omega increases, its angle decreases, magnitude increases. Angle decreases, magnitude increases. This is what happens when omega is varied from 0 to infinity. मेरा omega increase किया तो magnitude increase, phase decrease, magnitude increase, phase decrease. That is at different omegas, if you plot your current response, see here, at 1 omega it will be this much, at some other omega it will be this much, at some other omega it will be this much. Like that, with respect to omega, magnitude increase होके phase कम होके it will reach origin at omega equal to infinity. Okay, so this is your length, Em by R2. Okay, so now if you add all these tips, ये सारे tips को add करो, you get a shape of the circle. And इसको क्या कहते हैं? Current phasor I2 का phase locus diagram when omega is varied from 0 to infinity. समझ हो गया? कुछ दिक्कत है तो बताओ. ओके, right, you can see when omega is being varied from 0 to infinity, how your current phasor is varying. This is a way forming a semicircle. Okay, समझ हो गया? It increase, omega increase हुआ तो phase decrease, magnitude increase, phase decrease, magnitude increase. If you want to plot for the total current, plot कर सकते. पूरा करंट कितना होता है सर? I1 plus I2. I1 क्या होता है सर? Em by R1. It's a constant, not depending on omega. So एक constant line ले लो. एक मिनट, एक कांस्टेंट लाइन ले लो. ओके, इसमें I1 प्लस I2 क्या होता है? Em by R2 प्लस I2 सर, Em by R2 प्लस Em by R1 प्लस I2. Em by R1 is a constant. For this constant, I will be adding this figure. That is when omega is varied, your I2 varies and the resultant will come. Suppose this is I1 I2, resultant like this, your I1 I2 resultant like this, I1 I2 resultant like this. That is keeping one as constant, other तो vary होता है, resultant ऐसा आएगा. This is how your total current will come with respect to omega. ठीक है? No, current in any case capacitive circuit में current हमेशा lead है ना, positive आएगा. समझ हो गया? शॉर्टकट एग्जाम पे क्या करना मैंने दिया, बट हाउ दिस कम्स, दिस इज द वे. सो सिमिलरली इफ यू वांट टू प्लॉट द रेस्पॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट वी कॉल, with respect to your resistance as the variable. I have plotted for inductor as the variable na. Suppose if resistor is variable, what happens? If resistor is the variable, what happens? Okay, so R vary kiya to R2 is variable, R2 0 means then you will get this part 0, 1 by omega c will come, Em omega c angle 90 degrees. When R is infinity, 1 by infinity is 0 degrees and 1 by infinity is current 0. So it depends on the variable. If resistor is variable, आपका variation कैसा आएगा sir? Vertical. Okay, that is it starts with more magnitude, come to less magnitude. There, that is if your omega is variable, horizontal variation, resistance is variable, vertical variation. If it is for RC, leading आएगा, if it is RL,
नीचे आएगा. नीचे का मतलब क्या सर? लैगिंग. देखिए, लिसन हियर. Please see in this case. Here you observe shortcut. RC सर्क्यूट में XC वेरिएबल है तो आपका हॉरिजेंटल सेमी सर्किल आएगा. ओके, आपका R वेरिएबल है तो वर्टिकल सेमी सर्किल आएगा. RL पे सेम आएगा बट नीचे आएगा. ओके सर, डायरेक्शन कैसा लेना सर? एट ओमेगा 0 इंडक्टर शॉर्ट सर्क्यूट मोर करंट, ओमेगा इंफिनिटी लेस करंट, सो हाई टू लो लेना चाहिए. डायरेक्शन ऑफ द एरो ऑफ द कर्व. हियर आल्सो एट रेजिस्टर इज द वेरिएबल फॉर RC ऊपर आएगा, RL नीचे आएगा. डायरेक्शन here up to down, that is clock. Here anti. Why anti clock sir? When resistance is 0 more current, resistance is infinity less current. If you add these two you get RLC circuit. RLC circuit में क्या होता है सर? When capacitor is what we call dominating, you get the ऊपर part, inductor dominate किया तो नीचे part आएगा. That is before resonance, after resonance ले सकते हैं. So if you add these two you get this for RLC. That is for simple conclusion क्या होता है? RC में लीडिंग, RL पे लैगिंग. XC XL वेरिएबल है तो हॉरिजेंटल वेरिएशन, R वेरिएबल है तो वर्टिकल वेरिएशन. बस ठीक है. चलो नेक्स्ट, जस्ट ए मिनट. आप लोग इस क्वेश्चन, अरे यार क्या हुआ? अच्छा, आप लोग इस क्वेश्चन ट्राई करके आंसर बताओ. रीड दिस क्वेश्चन एंड गिव योर आंसर. Read this. Tell me the answer. Any answers? Option C. Let me check. Listen here. Simple baat. If you see here, this contains two paths. This is I1, I2. If you read the question, figure shows the locus diagram of the current phasor in the two branch parallel circuit. For each branch contains two elements in series. Okay. Firstly, what is this one, sir? It's a current leading the voltage and constant, not changing, not forming the circle. Current leads means fixed RC.
Here it is a horizontal semicircle. Horizontal semicircle will come and it is in the top part, lead, not lagging na. So what does it mean? It's a RC with which one is variable? C variable or XC variable. So what are the conditions you should select is multiple may. Here first option is correct and fixed R variable C is very simple. Okay, 1 and 4 are to be selected. It is a fixed RC part, I1 and I2. This is two currents are added, you will get the total current. Fixed RC part and here horizontal circuit in the top means fixed R variable C. Okay. If you want to see here, if you have in the bottom, it is RL, that is the lag condition wala ayeto. That is, if you have vertical circle like this, it is a variable R fixed C. If you have same vertical C in the vertical variation in the downward, it is a fixed R variable C. Okay, fixed RL पे नीचे आएगा, fixed RC पे ऊपर आएगा. Okay. Straight line is not R. Straight line is in phase, then it is R. Straight line lead or lag means either RC or RL, which is fixed quantity. Okay. So try this question also. Read the statement of the question. Here R1 is the variable. I will just give you a quick reference. No problem, no problem. See here. Here R1 is a variable quantity. What is the statement? Draw the locus diagram of the admittance vector. पूरा admittance का vector निकालना चाहिए. आप लोग options देके answer बताओ. You might have already seen the answer, then it is a different case. Otherwise, tell me the answer. Genuinely देख के listen here. R वेरिएबल है तो वेरिएशन वर्टिकली आएगा, सो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन वाला को छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन को रिमूव करो, हटा दो. वर्टिकल वेरिएशन ऊपर आएगा नीचे आएगा. ओके, सो यू शुड चेक एडमिटेंस इक्वेशन y इक्वल टू 1 by r plus j plus 1 by r plus j omega L2. ये दोनों ऐड किया तो यू गेट बाय कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन it is finally in the form of g minus jb. So it should not be in the top, it should be in the bottom. It should be in the form of g minus jb admittance. In these two, you should check, genuinely tell me how to find the arrow. How to find the arrow, sir? Find the initial and final conditions, from that you can find the arrow. So in the y1, see r1 is the variable na. If r1 is 0, short circuit karo, what is the admittance you get? 1 by j omega L1, right? If R1 equal to infinity, it is a open circuit. What is the admittance? 0. That is, your curve should be vertical because R is the variable. R is the variable, vertical आना चाहिए. But नीचे से it should be having initially more value, finally less value. कुछ दिक्कत है तो बताओ. You can use our shortcuts. Resistor variable है तो horizontal नहीं आएगा. G minus JB है तो ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा. इसमें एरो डायरेक्शन के लिए क्या करना? यू शुड फाइंड इनिशियल फाइनल कंडीशन. R1 0 में यू हैव मोर इंडक्टेंस, R1 इन्फिनिटी में यू हैव लेस, सॉरी व्हाट वी कॉल R1 0 एडमिटेंस इज 1 by j, R1 इन्फिनिटी एडमिटेंस इज 0. Definitely it will affect. That's why we write this equation na. If it is series, you should take R plus jx. Because it is parallel, for admittance you got this equation. Okay, for series he may ask z. According to the question we should check. आप लोग ट्राई करके आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, बस ज़्यादा नहीं चाहिए. बस आज से मेरा पूरा एसी एनालिसिस खत्म किया. 2 टॉपिक बाकी है, मैग्नेटिकल कपल्ड सर्क्यूट्स और 3 फेज सर्क्यूट्स. ये दोनों आपको चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, आप लोग मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से पढ़ देंगे. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में लास्ट 6 घंटे मैंने बताया. यू कैन सी दैट इफ़ यू वांट. फॉर इलेक्ट्रिकल 3 फेज चाहिए, ईसी को 3 फेज नहीं चाहिए. मैग्नेटिक कपल्ड सर्क्यूट्स तो स्पेसिफाई नहीं किया सिलेबस में, बट चांसेस तो है देने के लिए.
सो बेटर टू स्टडी इट. इसके अलावा पूरा एसी एनालिसिस मैंने कंप्लीट किया आपके लिए. सो आप बिगिनर है तो कॉम्प्रिहेंसिव पे देखो, एग्जाम के लिए इमीडिएटली चाहिए तो यू कैन कंप्लीट फ्रॉम हियर. टुमारो हमारे पास क्या ट्रांजिएंट का क्लास है, 3 घंटे में मैं ट्रांजिएंट का माराथन करेगा. आपको पूरा ट्रांजिएंट चाहिए तो 20 घंटे लगेगा. दैट इज अवेलेबल इन द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ये तो क्रैश है ना, आई विल गिव यू इन द फास्टेस्ट पॉसिबल वे. सो रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर. Okay, so read the question. Right, give a just read the question. Gaurav, it is the same for both. Just write IV relation, that's all. Find V and I relation, accordingly you should conclude, that's all. Take the series RL or parallel RL. You can prove it as a circle also. If you want, you can see my comprehensive course there. I proved it. This is a circle or not. Now see, the question is, figure shows the series locus diagram of admittance vector of the series RLC circuit. What is the, if omega is varied from 0 to infinity, which of the following is correct? आप लोग बताओ. Which one is the right answer? Option A or option B or C or D? Okay, chalo. Listen. Yeah, direction is important. If you see, omega less than omega naught, omega equal to omega naught, omega greater than omega naught. Resonance में discuss किया ना. Here z equal to r minus jx. Sorry, because it is lead. Here z equal to r. Here z equal to r plus jx. इसमें lag. Here y क्या होता है सर? 1 by r minus jx g plus jb. Here y equal to 1 by r. Here y equal to 1 by r plus jx. इसमें क्या होता है सर? g minus jb. So g plus jb से it will go to g minus jb. So omega vary कहे तो it should go from positive to negative. So right answer क्या होता है सर? Option A. It will move from g plus jb and it will go to g minus jb. g plus jb से start करके g minus jb तक पहुंचेगा. ठीक है? So this is what happens here. Because both are, you know, omega variable है तो horizontal circle, वो हमको पता है. But whether it is direction, clock or anti, how to decide is like this. This is the last question for today. Okay. So ये तो गेट 2018 पे दिया. आप लोग थोड़ा सा जान करो. मैं तो क्वेश्चन करेगा. इस वाला क्वेश्चन में IR0, V0, okay, and we need to plot I versus V locus diagram. Here it is a RL circuit. Voltage source of 5 volts is applied. DC 5 volts is applied. Source is closed at time t equal to 0. How to solve this question is, you should take the help of Laplace transforms. 5 by S, because the DC is there. Inductor SL, capacitor 1 by SC. Okay, now what is the required condition is, you need to find this current I of S and this voltage V of S. I of S क्या होता है? 5 by S by SL, L is 1 by 1 by SC. That is 5 by
s square plus 1. What is I of t? 1 by s square plus 1 square. It is inverse Laplace transform क्या होता है सर? 5 sin t. वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है सर? 1 by c इंटीग्रल नो इनिशियल वैल्यू ना I dt. So integration of 5 sin t. It will give you minus 5 cos t from 0 to t. It will give you 5 minus 5 cos t. So current is varied from 0 to, sorry, what is the variation of sin theta is minus 1 to plus 1. So current varies from minus 5 to plus 5. Similarly here also cos theta का variation क्या होता है सर? minus 1 to plus 1. So minus 1 substitute किया तो 10 आएगा, 1 substitute किया तो 0 आएगा. So voltage varies from 0 to 10. If it is not visible, I will write it, don't worry. So इस केस में क्या होता है सर? मेरा करंट तो ये कहाँ से आया? Just a minute. 1 minute. Sorry. Yeah. Here I is varied from, sorry, minus 5 to plus 5. Voltage is varied from 0 to 10. Which option is satisfying that? Check it. आपका I कहाँ से? Here देखो, I is varying. It is a circle of radius 10 ना. V का variation 0 से 10. I का variation 5 से minus 5. But इसमें देखो, इसमें voltage is varied from 5 to minus 5. Current is 0 to minus 10. Wrong. Here voltage 5 to minus 5. Current 0 to 10. Here voltage 0 to minus 10. Current 5 to minus 5. Wrong. So what is the right answer is current minus 5 to plus 5. Voltage will vary from 0 to 10. Okay. So I hope you understand this logic. Just limits of the cos and sin. Okay. Is it fine? That will end for today's class. फिर मिलेगा कल शाम पे 6:30 पे ट्रांजिएंट वाला सेशन पे. ओके कल ट्रांजिएंट वाला सेशन पे डिस्कस करेगा वापस. आपका लॉकस डायग्राम भी कंप्लीट हो गया. सो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करो. मैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन पे है, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे सारे नोट्स भेजता हूँ. शाम 5:30 पे मिलेगा टू पोर्ट नेटवर्क्स के बारे में. टू पोर्ट भी कंप्लीट करेगा आज. इसके बाद क्या बचा ट्रांजिएंट, वो तो कल डिस्कस करेगा. In the shortest possible time, I have given you the best possible content for you. Utilize it properly, guys. Thank you very much. Just a minute. I want to give you some information. I missed it. Okay. मेरा बेसिक कोर्स तो चल रहा है. ओके 3 क्लासेस हो गया. Those who don't know anything about network can attend these classes. Please refer this to your friends. They can attend this Unacademy free classes, guys. So कल मार्थन सेशन आ रहा है. विशाल सर और कामेश सर मी सारे अच्छी वाला क्लासेस अवेलेबल है फ्री फॉर यू completely. Don't miss the classes, guys. So these are the batches taken by all our top educators of Unacademy right now, and these are the batches going on in English and Hindi. So register for this marathon session, guys. 29th is the combat session. Last time it happened in 16th na, so you can crack all these prizes freely. Just give a try. Just check this. Always enroll in this kind of competitive exams, which will definitely enhance your skills. Thank you. शाम पे क्लास है गौरव, फिर मिलेगा. बाय बाय. थैंक यू. लव यू ऑल.